है अपनी वो सेव करने के लिए, तो वो कर सकता है, फाइन, ठीक है, इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। लेकिन डरो नहीं, मतलब कि एक जॉब हो गई, दूसरी जॉब के लिए जा रहे हो, तो कोई डरने की बात नहीं है इसमें, सो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। अच्छा, चलें, वी आर लाइव, ओके, वी आर लाइव। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सो ये हमारा लाइव सेशन है, और ये जो है बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है AWS की। सो मैं तुम्हारा सीवी खोल के देख रहा था कि तुमने कौन सा सीवी अप्लाई किया था। एक मिनट सब्र करो, ठीक है। उसमें तुमने हमारी चीज़ें लिखी हुई सारी, तुमने मुख्तलिफ तुमने वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कि तुम, ये पहले आपने ही बताया वाला रेज्यूमे तो। हाँ, डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक, ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक, हैंड्स ऑन वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, सब चीज़ तुमने लिखी हुई, ठीक है, सही है। अब मैं तुम्हारी जॉब खोलता हूँ कि जो तुम्हें उन्होंने बुलाया है उसमें तुम्हें वो क्या करना है ना। तुम्हें उन्होंने क्या बताया, कितने राउंड्स होंगे, जरा बताओ। 4 राउंड्स उन्होंने बोला है। फर्स्ट राउंड जो है वो 80% टेक्निकल होगा, और बाकी सेकंड राउंड जो है वो बोलते हैं कि वर्चुअल ऑन साइट इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद जो लास्ट 2 राउंड्स हैं वो बस बेसिकली बिहेवियरल क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो फर्स्ट राउंड जो होगा वो टेक्निकल होगा, राइट। जी। तो राउंड नंबर 1 जो है वो टेक्निकल है, जो तुम्हारा कल है, कब है? वो तो 3 अक्टूबर को है। ओ, 3 अक्टूबर को, ठीक है। तो फिर तुम्हें आज आधी तैयारी कराते हैं, ठीक है ना। और टेक्निकल है, और उसके बाद क्या है, फिर तुम्हारा क्या है? उसके बाद भी जो है वो 50% टेक्निकल है, 50% बिहेवियरल क्वेश्चंस है, और वो वर्चुअल ऑन साइट इंटरव्यू उसने मुझे जो बताया है। अच्छा, वो ऑन साइट हो सकता है या वर्चुअल, डिपेंडिंग के हम कहाँ जाते हैं अभी कोरोना वायरस में, राइट। जी। तो सो ये टेक होगा और पर्सनैलिटी बेस होगा, राइट, जी। ठीक है। और थर्ड? थर्ड बिहेवियरल क्वेश्चन आई थिंक वो डायरेक्टर से बात करवाएंगे, बस जो एक होता है फॉर्मेलिटी, मुझे लग रहा है। अच्छा, और फोर्थ? फोर्थ वाला भी इसने सेम यही बोला है, बोलता है कि टेक्निकल ऑलमोस्ट सारे होंगे पर फर्स्ट 2 जो है वो मोस्टली टेक्निकल होंगे। अच्छा, ये जो तुम्हारा रोल है ये है AWS प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है ना, प्रोफेशनल सर्विसेज में। तो इसका AWS का जो क्लाउड है उसके पास सबसे बड़ा इस वक्त ना वो है, यानी कि शेयर ऑफ द मार्केट है, राइट। सो जी। ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि AWS हैज द बिगेस्ट शेयर इन द मार्केट राइट नाउ, राइट। सो जी। अगर मैं इसके ऊपर जाऊं और इफ आई शेयर माय स्क्रीन, लेट मी डू दैट, मैं तुम्हें बताता हूँ। सो AWS क्लाउड शेयर इन USA या ग्लोबली अगर हम करें तो क्या है, आई मीन वी कैन नो दिस। सो AWS जो है, आई मीन उनका शेयर इतना बड़ा है, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ द चार्ट्स, लाइक इफ यू लुक इनटू इट। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मॉनिटरिंग है, ये जितनी चीजें हैं, अगर हम देखें तो मल्टीपल चीजें आती हैं ना। एक होता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है, अगर मैं स्टैटिस्टिक करके देखूं तो 200 बिलियन की क्लाउड मार्केट है, ठीक है ना। हम्म। और इसमें ऑलमोस्ट यानी कि जो क्लाउड स्पेंडिंग है ये क्वार्टर बाय क्वार्टर है, ठीक है ना। तो Q2 जो क्वार्टर अभी चल रहा है, अभी Q3 चल रहा है, 55 बिलियन पे थी, 55 बिलियन, with the 8 largest providers controlling more than 80% of the market। 80% मार्केट दुनिया की इनके पास है, लेकिन इसका मतलब AWS में सबसे बड़ा शेयर है, 34%। तो अगर तुम देखो तो ऑलमोस्ट यानी कि 200 बिलियन का अगर मैं 34% करूँ, ठीक है ना। सो तो दैट्स 68 बिलियन, ठीक है ना। तो $68 बिलियन ये लोग क्लाउड से कमाते हैं। अगर मैं सिर्फ देखूं AWS क्लाउड अर्निंग्स, ठीक है ना, इनकी क्लाउड अर्निंग्स क्या है, तो Amazon was left with 7.5 operating income with 36%। Year over year इनका काफी इंक्रीमेंट है। Amazon cloud business grows almost 37%, ठीक है ना। तो you can see कि इनकी year over year जो वो शेयर है वो बढ़ता चला जा रहा है, राइट। तो you can जी। see it keeps on increasing, right। तो almost 17.5 बिलियन के ऊपर ये है, ठीक है ना। ये इनका क्वार्टर टू क्वार्टर जो चल रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी के इट्स ऑलमोस्ट यानी कि एक ही साल के अंदर ये लोग, मल्टीपल क्वार्टर्स होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट 68 to 70 बिलियन डॉलर ये कमाते हैं। दैट्स अ ह्यूज ह्यूज मार्केट शेयर।
तुमने जो सारी चीजें पढ़ी हैं, ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक, डेवऑप्स में एडवांसमेंट ट्रैक, सब चीजें, मैं इसके ऊपर तुमसे बात करूंगा। यहाँ इन्होंने लिखा है कि AWS के जो प्रोफेशनल सर्विसेज है, एक्सेलरेट टू कंसल्टेंट A2C is an accelerated career development program for college graduates and technical professionals early in their postgraduate careers. The program consists of self-paced technical curriculum, regionally based classes, classroom trainings, AWS certification training, shadowing and hands-on billable project work. तो इसमें तुम्हें हर काम में डालेंगे ये लोग, ठीक है? जी तो ये वही चीज है जो हमने बनाई है, जो हम अपने वहां पर करा रहे हैं, ठीक है? तो ये फर्क इतना है कि ये तुम्हें पढ़ा भी रहे होंगे, लेकिन ये तुम्हें सिर्फ AWS स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं, हम तो सब चीजें पढ़ा रहे हैं। ये तुम्हें जी AWS स्पेसिफिक पढ़ाएंगे और तुम्हें वो भी कराएंगे। इसके बाद हमने लिखा है बिस्मिल्लाह, Do you want to work on a planetary scale security solutions in the cloud? यानी कि कह रहे हैं कि planetary scale पे इतनी बड़ी solutions हैं इनके पास कि I mean it's pretty big, right? So you can imagine कि इनकी teams बड़ी बड़ी हैं, work life balance भी है, almost 85%, 85,000 employees इनके पास काम करते हैं, ठीक है? जी और इसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी तुम्हारे पास है, तुम घर से भी काम कर सकते, सब कुछ है, मेंटरशिप एंड कैरियर ग्रोथ भी है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तुम्हारी, roles and responsibility है, build and deploy security infrastructure and automate security operations for customers. So अगर तुम्हें Dockers, Bash, Python automation ये सब याद है, you can do this thing. समझे भाई? जी पाइथन ऑटोमेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, कल मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो इंशाल्लाह मैं कर Python दूंगा। automation तुमने कर दिया ना, तो Python automation तुम्हें सबके ऊपर काम बताना है कि भाई मुझे ये सब काम आता है, Selenium हो गई, जी Python automation हो गई, Git हो गई, Terraform हो गई, you know I'm working on all of these areas already, ठीक है ना? जी उसके बाद है कोलैबोरेट ऑन इंटरनल बिल्डर प्रोजेक्ट्स, जो इनके पास बिलेबल वर्क आता है तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स पे काम करना, सब कुछ करना, ठीक है ना? बिकम अ डीप टेक्निकल रिसोर्स दैट अर्न्स आवर कस्टमर ट्रस्ट। तो बोलना भाई देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी इज आई एम होनिंग माई फाइन आर्ट ऑफ हाउ आई कैन ट्रांसलेट all the business requirements of a given customer into and map them to relevant AWS solutions, ठीक है? जी Because that's exactly what my role is going to be after looking at all the things. My role is to essentially assist the customers to understand and their business requirements, and then how each of these business requirements can be met by a specific AWS solution. And if those business requirements are PCI DSS, AWS can do that. ISO 27001, AWS can do that. CMMC, the certificate, the cyber security maturity model certification, and for the governments, for the federal government, I can do that with AWS. And if it's related to SOC section 404 or whatever the IT general controls, we can do that. If it's related to ML, AI, blockchain, and this is the reason that I mentioned in my resume, blockchain advancement track, is because, I went through the development process of developing blockchain applications, blockchain, NFTs, cryptos, smart contracts, and the security elements within these things as well, right? So I'm covering all of the deeper aspects to ensure that I understand these requirements and I'm able to basically map those requirements to a given customer solutions. Now, granted, I'm coming here for the first time at AWS, but I've already mapped out pretty much all the key solutions as it relates to DevOps and cyber defense and offensive security, and you can say blockchain with respect to customer requirements and AWS solutions. अगर वो बोले how, तो remember those goggles जो हमारे पास goggles हैं, मुझे पता है ना goggles, what those goggles are. Let me open and share my another computer screen. मैं आपसे share करूँ. This will give you an idea कि वो बोलेंगे कैसे तुमने कैसे मैप किया, क्या किया तुमने, मतलब कि तुम कैसे मैप कर रहे हो, क्या, what exactly are you doing, तुम क्या कर रहे हो, right? So I want you to see this and understand this thing. Continue. Got it. So this person, मैं इसको कहाँ गया? Yes.
अच्छा फैसल भाई, इन्होंने मुझे एक और भी चीज़ बोली। इन्होंने मुझे बोला है कि हम आपसे 60 मिनट्स की मीटिंग करेंगे इंटरव्यू प्रेप के लिए। और वो होता है नॉर्मली या यहाँ पे होता है? नहीं, क्या मतलब 60 मिनट्स की मीटिंग करेंगे फॉर व्हाट? इंटरव्यू प्रेप के लिए। फॉर व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू? ये जो अभी ये मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू है ना, तो रिक्रूटर ने बोला है कि मैं आपसे 60 मिनट्स की मीटिंग सेट कर रही हूँ, वहाँ पे मैं हाँ आपकी हेल्प हाँ करूंगी। अच्छा। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल, वो रिक्रूटर मिलने चाहिए ना, हाँ बोलो भाई, क्या हुआ, मसला ही नहीं। रिक्रूटर पूछेगी, क्योंकि रिक्रूटर को फायदा होता है ना, तुम जाओगे, तुम सेलेक्ट होगे, तो रिक्रूटर को फायदा होगा, तो वो अपना फायदा जी देखेगी कि भाई कि ना मैं कैसे जो है ना वो कर सकती हूँ ना। ठीक है। सो जी। तुमने यहाँ पर इनको बोलना क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ना, जिसमें तुम इनको बात करनी। ठीक है, वो मैं तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ, और तुम यहाँ पर उसको मैप करके बता भी सकते हो। ठीक है। सो बोलना, फॉर एग्जाम्पल तुम उसको बोलना। ठीक है, लेट मी डू दिस। सो अगर तुमसे बोले कि भाई हाउ डू यू नो व्हाट solution is what, so बोलो फॉर एग्जाम्पल, there are different customer requirements that I receive, right, as part of working within my existing employer. And what I do is basically, we go through multiple things. So one of the things is like, what kind of solutions maps to cyber security requirements of customers. So you can say AWS Secret Manager, AWS Inspector. Secret Manager is for managing passwords and secrets, API keys and stuff like that. Inspector is for inspecting the code, performing static and dynamic code analysis. Security Hub, single sign-on, Amazon Cognito, network firewall. I mean, I know and understand all of these key things that you guys have, because what we do is what my one of my key role is, which is essentially is that the existing organization where I'm working, they come to me with different aspects, and my role is to, and this is something I've done in the past. जब तुम अपना CV का बताओगे कि with us, जो तुमने वहां पर बताया ना, ठीक है ना, जी went through all of these things, ये तो किसी और का CV है, so ये तुम्हारा ये रहा. So बोलना कि भाई, working as a cloud cybersecurity consultant, my role was to make sure that how these specific requirements are met, whether जी those are 27,005 or 27,001, 2717, or 18 for cloud security and cloud privacy. And each of your solutions, like site-to-site VPN, AWS Shield, Systems Managers, OpsWorks, Cloud Formation, all of these things, right? They map, like Amazon managed Grafana. Grafana is like for managing all the alerts for in terms of compliance purposes, right? AWS जी WAF, it's a great WAF which satisfies the requirements for PCI DSS requirement 6. Identity and access management solution, this meets all the requirements and supersede the requirements as relates to 27001, PCI DSS, SOX, IEC 62443, SSA 16, type 1, type 2. I mean, you name it, like it meets all these requirements, right? So जी all of these solutions, what I do is, my role is to, if I see something, so don't mention the name from GCP and IBM. Bolo, I know I have done the similar thing with GCP and IBM as well, by the way, right? So sometimes, AWS wins during the comparison. Sometimes it's GCP, but obviously, if given the opportunity, my number one priority would be to make sure that I'm able to sell and promote and basically preach all the AWS services, right? जी So in that aspect, I will make sure that I do whatever I can in my capacity to make this thing happen. समझे भाई, Aris? जी ठीक है ना? This is the most important part, because you have to mention to them कि तुम कैसे क्या करोगे ना. This is the most important part, because you need to make sure that they are aware of how all of these things are lying out, right? ये तुमने उनको बताना है, बिकॉज इस तरह उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई हाँ इसको, क्योंकि देखो तुमने ये सब चीजें पढ़ी नहीं, तुमने सब चीजें की नहीं, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट इससे तुम्हें जो है ना बहुत अच्छी तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी. ठीक है. नाउ साइबर डिफेंस, इसी तरह तुम देख लो इसको. आई मीन दीज गॉगल्स मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ. ठीक है, मैं तुम्हें कॉपी करके भिजवा देता हूँ. लेट मी डू दैट फॉर यू, ताकि तुम्हारे पास ये आ जाए, सो दैट्स इज इजी फॉर यू. ठीक है.
यही जी। काम जो है दूसरा वाला जो लड़का है वो भी ये काम कर सकता है, ठीक है। तुम्हारी भी मैं बताता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो वो है बोलना कि भाई सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू solutions like, for the offensive security, there are certain things like Amazon Detective, Code Inspect, Cloud Trail, Amazon Inspector, API Gateway, Cloud Healthcare API. I mean, not these ones are for GCP, but just mention the AWS parts, right? And then for the IoT part, say, similarly, when it comes to meeting a customer who has IoT requirements in regards to IC 62443 or whatever, there is there are different things that you guys have. Like, for example, you can say, AWS IoT Express Link, free ROTS, which is the real-time operating system for robots and stuff like that, for automation purposes, Greengrass, connectivity and control services. I mean, my role is to make sure whenever I go in, my job is to make sure that AI, blockchain, whatever the case is, I go in and I review all the applicable AWS services. And then my role is to make sure, that those services are meeting the customer requirements, right? So in case of AI, there is Amazon Translate, Personalize, Amazon Extract, Forecast, Text Analytics, Comprehend, Lex, Kendra, Recognition, Transcribe, Poly, SageMaker, all the good stuff that you guys have, right? So this is what I do. I'm already doing this, what is required, but obviously my role at that stage is basically reviewing all the key requirements in line with Amazon, GCP, and IBM and Azure. But I've given the opportunity. The unique skill I have, I would say, is that if I'm given the exposure of experiencing all of these things, which I'm sure that you've mentioned here, that you guys train people in terms of providing all these things, right? So सब कुछ दिया जाता है, certifications and regional based classrooms and whatnot. One of the things I would like to do is like create these smaller projects, right? Because हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? What we are doing is we are teaching you all of these projects. हम तो तुम्हें सारे projects पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है? तो we are covering these projects, right? तो हम what we are doing is, जैसे अगर तुम DevOps की बात करते हो, and if you go about DevOps, right? तुमने लिखा है, ठीक है? तो DevOps के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी तुम जो काम की चीज पढ़ रहे हो वो ये है, पाइथन ऑटोमेशन और बेसिकली डॉकर खत्म कर लिया है, ठीक है ना। इसके बाद तुम्हें बैश हैंड्स ऑन, सेलेनियम, ये सब खत्म करने हैं तुमको, ठीक है। तो तुमको बोला भाई व्हाट आर द की थिंग इज लाइक everything nowadays is infrastructure as a code. That is why I'm expanding my coding skills, taking it to the next level. I'm going to classify myself as a man on a mission to learn these things, right? And in the next 3 to 6 months time, I can say that I'm there, because it's a journey. It's a journey, and this is an associate role where you will train us, right? ऐसा ही है ना? Because the role says that they will train you, right? So that is the role, right? Because the role says that associate security consultant, right? So they will train you. This is US and virtual. So good चीज ये है कि this is all virtual, right? ये इसकी अच्छी चीज है. So this will help you. इसकी तुमने ये देखी कस्टमर डिलीवरी आर्किटेक्ट, देखो ये बंदी है जो डिलीवरी की सब चीजें बना के देती है, बैठी हुई कनाडा में, देखो कनाडा का फ्लैग भी लगा हुआ है इसका. So let's watch this. Customer is their business vision. The most exciting part of my job is the variety of topics that I have to address. I look at what I want to do, I ask questions, then I come up with a solution. I really long for more people-to-people interactions in my day-to-day, and that's exactly what ProServe offers. I am surrounded by probably the best intellect you can possibly imagine. I work with people who are passionate about technology and obsessed with customer success. There's always everything changing, so we need to keep up. AWS gives you an autonomy to grow, to build your career and go wherever you want to go. I did not have much background in machine learning, but the resources provided to me internally have been of great help. I've never been in a place where you've learned so much in such a short amount of time.
So एक चीज उनको highlight करना, बोलना कि I went through everything that you provided to me, and what excites me the most is basically, if given the opportunity, I understand about PCI DSS, I understand about IEC 62443 for industrial control systems, I understand about 27001, SSAE 16, Type 1, Type 2, you know, whatever the cybersecurity and the GRC requirements are, the business requirements are. I understand the key aspects in terms of DevOps and SecOps and DevSecOps, AI, ML, SCADA. I mean, you know, big data. And from the business perspective, what gives me the most insight is to ensure that, you know, the business lingo, the business requirements, and the unique blend that I have now is like, because of working with all of these different organizations, and even with Anafe, is like, you know, they provided me the insight, the vision, the foresight to see the business requirements and how they can be mapped together. So Haris, tumne hath use karna cha, how they can be mapped together, right? Yes. See, and this is the solution. As you can see here, it has to be embedded within the fabric of the organization, right? Islam, जो है ना, Islam, कुरान ये है, अल्लाह ताला कह रहे हैं इसको थाम लो, ये कह रहे हैं इसको थाम लो, ठीक है? ओ यहाया, hold the book tight. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब ये आयत पढ़ी तो मेरी दाढ़ी ग्रे हो गई, जैसे मेरी दाढ़ी बीच में ग्रे हो गई ना, जितना मैं पढ़ता हूँ उतनी ज्यादा ग्रे हो रही है, ठीक है? वो ठीक है, एज इतनी नहीं जितनी तेजी से दाढ़ी मेरी ग्रे हो रही है. द रीजन इसके मुझे टेंशन होती है, यार कैसे करूंगा मैं, ये कैसे करूंगा यार, ये कैसे करूंगा. हाँ देखो तो सारे जो है ना अजीब, हमारे हुक्मरान जो है ना सारे खंजीर बन गए सब लोग, ठीक है ना, सब कुत्ते हो गए, अजीब अजीब. अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि भाई ये इनकी मिसाल कुत्तों की तरह है जो हामते रहते हैं, बिकॉज दे फॉलो देयर शहवा, दे फॉलो देयर नफ्स, ठीक है ना, एंड दे फॉलो देयर डिजायर्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं होल्ड द बुक टाइट, एंड वी सेइंग नहीं हमें बुक नहीं चाहिए. सो हमारे स्कॉलर्स भी कुछ नहीं करते, ठीक है? सो पार्ट ऑफ बिकमिंग द स्कॉलर इज लाइक यू हैव दिस responsibility now to state the truth. अब सच सच बोलो, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं सच बोलो. मैं कहूँ सच तो बोलो ना, क्या करूँ, सच तो बोल सकता हूँ ना. That is the thing, right? So तुमने इसमें ये काम करना है. This is a very good opportunity for you because you'll be learning a lot. So it will be more about where do you see yourself, ठीक है ना? अगर मैं इसको जाऊँ and if I share it again, because देखो तुम्हें एडवांसमेंट ट्रैक यहाँ तक खड़ा कर दिया. कल मेरी बात हो रही थी एक बंदे से, वो ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक और वो डेवऑप्स पढ़ रहा था. उसकी 65,000 पाउंड्स की जॉब होगी वीकेंड, हसन एजाज. तुम्हें वहाँ डाला है ना, तुमने देखा उसको ना? जी. ठीक है ना, तो उसका भी इंटरव्यू आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये देखो, बेसिक क्वालिफिकेशन, 1 year एक्सपीरियंस इन आईटी सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट, यू मीट दिस, ठीक है ना? जी. और इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सपीरियंस तुम्हारे पास दोनों है, ठीक है ना? एक्सपीरियंस इन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट, वो तुम यहाँ पर तुमने किया है, तो डू मेंशन, ठीक है ना, I'm extensively working every day with a group where we are creating different projects using Python Selenium, Python, you know, and Python automation aspects in terms of creating templates, infrastructure as a code, and then embedding security as a code and all these key things. देखो job किसकी है? Security की ना. मांग क्या रहे हैं? जी. Scripting, Python. Bash, तुम बोलो I'm a Bash, you know, you can, I wouldn't call myself Bash ninja, बोलो, or Bash sensei. I would say like I'm a Bash warrior, right? I can fight with Bash, ठीक है? सही है? Not bashing the keyboard but creating the script, ठीक है? इस तरह से मजाक भी थोड़ा सा करो, ठीक है? So this is important. देखो यहाँ उसने लिखा है कि जो ना, मैं तुम्हें कुछ अर्ली चीजों का एक्सेस देता हूँ. Hands-on technical expertise in building security capabilities in code and deploying infrastructure as a code. तो ये जो है ना DevSecOps है. देखो मांग क्या रहे हैं, बोल रहे हैं DevSecOps ही मांग रहे हैं, अंदर DevOps भी डाल दिया, सब चीजें डाल दी, ठीक है ना? सही है ना? तो मतलब कि दुनिया में रिक्वायरमेंट बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है, ठीक है? देखो यहाँ पर PCI DSS, HIPAA, सब ये कैट सब चीजें आ गई, ठीक है? बिल्कुल सही है ना? ये सारा कैट आ गया, ठीक है ना? ये सारा जो है ना DevOps आ गया, ठीक है ना? ये सारा DevOps है, ठीक है ना? ये DevOps है, ठीक है? ये सारा कैट है, WAF, IPS, IDS, ठीक है ना? सही है? ये सारा जो है ना, तो ये यू सी के ये सारा कैट के अंदर कवर होता है. सो एवरी जॉब इज अ मिक्सचर, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाई आई मेंशन एवरीवन के भाई कोई ब्लॉकचेन में जाए, AI में जाए, ML में जाए, किसी में भी चले जाए, साइबर में जाए, ऑफेंसिव में जाए, कहीं पर भी जाए, उसके लिए जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है, जो बहुत ज्यादा उसको लाजमी चाहिए, वो DevOps का चाहिए. DevOps, SysOps एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम लेकर आ रहे हैं ना,
तो आई विल शो यू, उसने कंप्लीट कर लिया है, पहला एस्पेक्ट उसका कंप्लीट हो गया है, तो वी विल रिलीज इट इंशाल्लाह। बिकॉज उसको तो पढ़ते ही आपको ना मतलब कि देखो, तुम्हारा जो काम है ना, तुम्हारा जो काम होगा जब तुम जाओगे अंदर, यही सारा काम होगा, तो तुमने लर्निंग रोकनी नहीं है अपनी, मैं तुमको बता दूं, जी ठीक है ना। तो तुम्हें सारे के सारे जो कॉगल्स हैं उस पे तुम्हें पता हो कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तुमने इनको यही बताना है कि भाई मुझे सब चीज़ों का पता है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पर हमने ये सिसऑप्स का एडवांसमेंट ट्रैक आ रहा है, सिसऑप्स एंड क्लाउड एडवांसमेंट ट्रैक, ठीक है ना, उसका नाम है सिसऑप्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहाँ गया है वो, असल में ये मेरा वर्किंग बोर्ड होता है जिसमें मैं सब चीज़ें ड्राफ्ट करता हूँ, बनाता हूँ, उसके बाद फिर वो आगे जाता है, सैट के नाम से, वो सैट, ये रहा। सो इसके अंदर तुम्हारे पास जो है ना मल्टीपल चीज़ें हैं, तो अगर तुम देखो तो यहाँ हमने सारी चीज़ें तुम्हारी डाली। AWS सोल्यूशन आर्किटेक्चर, वो जो बंदी है ना जो सोल्यूशन आर्किटेक्चर, तो बोलो भाई कि आई एम राइट नाउ वर्किंग इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग यू नो solutions using AWS, VPC, IAM, you can say what are the VPC components, ये सब चीजें तुम उनको कोड कर सकते हो, ठीक है जी ना। सो सही। ये सारा का सारा जो मैंने उससे बनवाया ना, क्या नाम है इसका, काजिम से, ये तुम्हारा पूरा आर्किटेक्ट सोल्यूशन आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर है। तुम अगर तुम यहाँ सब चीजें करके जाते हो और तुम इस जॉब के लिए आके अप्लाई करते हो कि भाई मुझे अप्लाई करना है, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा, वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, जी मतलब कि सवाल क्या है, क्या होगा तुम्हारे साथ, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे तुमको, जी, क्या बोलेंगे तुमको अगर तुम्हें सारा काम आता है। तो वो तो फौरन हायर करेंगे वो तो। तो यही ना, तो तुमने वो चीजें जाके इनको बतानी है। ये इसमें तुम्हें बहुत लर्निंग के लिए तुम्हें ना 3 से 6 महीने, 3 महीने तुम्हें ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो जी, और 1 साल बाद जो है वो सीनियर कंसल्टेंट बनाएंगे, मतलब ये हाँ ट्रेनिंग के हाँ, बाद। 1 साल में अगर तुम इनके साथ लग गए और तुमने काम कर लिया, वो जो हमारी डिग्री प्रोग्राम्स है ना, जो मैं 23 सितंबर को बता रहा हूँ, उसमें हम सब चीजें बताएंगे, सब कुछ उसमें इतनी सारी चीजें हैं, ये सारी लैब्स हैं। तो हमारे जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं ना, उसमें एकेडमिक कार्नेगी मेलन और हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड लेवल की चीजें उसके अंदर पढ़ाई जा रही हैं आपको। और ये सारा बिजनेस स्किल्स जो है ना, सारे बिजनेस स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल की राइटिंग तक हम लिखवा रहे हैं उसमें, सब चीजें उसके अंदर करवा जी रहे हैं। तो जब वो बंदा करके जाता है तो क्या होगा उसके साथ, ठीक है ना। जी सो हम इनवाइट करेंगे सबको कि भाई आओ, ठीक है ना, आके बैठो, ठीक है, बात करो। सैलरी तुम्हें जो भी दें, मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, ग्रैब इट। मतलब अगर मैच भी करें तो ले लो। तुम कितनी मांग रहे हो उनसे, तुमने कुछ बोला। मैंने तो उनको बोला कि 6 फिगर्स, तो उसने बोला दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। यार मतलब कि 6 फिगर तो अंडरस्टूड सी बात है ना, 1 लाख से ऊपर ही देंगे ना, $1 लाख से ऊपर ही देंगे। और वो जो उसमें लिखा हुआ, आप जाएंगे नीचे तो 83,000 लिखा हुआ है इसमें। वो लिखा Starting। है फॉर एम्प्लॉय बेस्ड इन कोलोराडो, लिखा है। अच्छा तो पढ़ना सीखो हारिस, लिखा है फॉर एम्प्लॉयज बेस्ड इन कोलोराडो, दिस पोजीशन स्टार्ट्स एट दिस ईयर, a sign on सही bonus and restricted stock units may be provided as part of the compensation package. In addition, ये लिखा है। तो सही। ये जो ट्रेनिंग है ना, इसमें देखो एक्सपीरियंस विद शेफ, पपेट, सॉल्ट, एंसिबल, और तुम अगर वही जाओ वापस हमारा डेवऑप्स का प्रोग्राम खोलो और तुम बोलो यार डेवऑप्स में हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं डेवऑप्स में, ठीक है। मतलब कि यही तो चीज है ना, और ये चीजें वो नहीं है कि सिर्फ पढ़ा दिया, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट्स करवा रहा हूँ उसमें तुम्हारे साथ, यही तो चीज है ना। तो डेवऑप्स में देखो जी क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जी, शेफ, पपेट, ठीक है ना, चैप, पपेट, शेफ, एंसिबल, जेंकिंस भी आ गया इसके जैक। अंदर, जेंकिंस खत्म होते चले आ रहा है लेकिन अभी भी यूज हो रहा है। वैग्रेंट है, ठीक है ना, ग्रेडल है, जी टेराफॉर्म है, ये कमर्शियल टूल्स हैं, ठीक है ना, सही है। ये सब चीजें हैं, और क्या बचा, और कुछ है ही नहीं। और उसके बाद फिर इनकी सारी सॉल्यूशंस भी कवर कर लो, जो इनकी सॉल्यूशंस हैं, जो शेफ पपेट का जो मुकाबला करता है, वो क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट्स करता है। अच्छा, और एक और क्वेश्चन फैसल भाई, तो ये कोडिंग का अगर मुझसे पूछेंगे तो वो मुझसे कोई कोड लिखवाएंगे या तो। हो सकता है तुम ना, इसलिए मैं तुम लोग को कहता हूँ ना कि जाओ प्रैक्टिस करो ऑटोमेशन में, इसमें तुम्हें काफी काम करवाया है ना तुमसे, ठीक है। जी पाइथन ऑटोमेशन में इसने तुमसे बहुत अच्छा काम करवाया, लर्न दिस, ठीक है ना। और पाइथन ऑटोमेशन में वो नेक्स्ट लेवल पे ले गई है, ठीक है। और उसके बाद सिलेनियम भी है उसके पास, बैश भी है, तो तुम्हें हो सकता है बैश की स्क्रिप्ट दें, ये एसोसिएट लेवल है, तुम्हें बैश की स्क्रिप्ट दें। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ,
अगर तुम्हें करना है तो डू दिस, ये AWS का टेम्पलेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ, ठीक है, मैं तुम्हें मशवरा, क्योंकि ये चीजें हम लोग, अच्छा एक चीजें जो ये करा रहे हैं ना, हम तो खैर इससे आगे, हम तो अमेजोन को भी पीछे लेके चले गए एक तरह से, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने इन तमाम चीजों के ऊपर सोल्यूशन बनवा दिए, ठीक है। जी। तो अमेजोन से भी हमारी बातचीत होने वाली है, उन्होंने कहा है कि यार तुम लोग कर क्या रहे हो, मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू गाइस डूइंग, ठीक है। तो मैंने उनको बोलना है कि भाई हम तुम्हारी चीजें प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी चीजें दुनिया इस्तेमाल करती है, तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो तुमने करना क्या है कि यहाँ पर एक चीज है, टेम्पलेट्स, ठीक है ना, AWS टेम्पलेट्स, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के, तो तुम्हें बहुत सारे कोड के टेम्पलेट्स मिलेंगे, ठीक है। और वो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जो तुम्हें हर जगह से मिलेंगे, तुम्हें गिट पे मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। गो एंड चेक दीज टेम्पलेट्स। ओके। ये टेम्पलेट्स हो सकता है तुम्हें वो टेम्पलेट दें, ये टेम्पलेट है जी, इसको खड़ा करें, इसको चेक करें, इसमें क्या चीज गलती है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाट यू नीड टू चेक। सही। और वो सब के सब पाइथन और बैश पे चल रहे होते हैं, दिस नथिंग एल्स, पावर शेल आ जाएगा कभी, लेकिन पावर शेल, बैश, पाइथन सब ऑल द सेम, दिस इज नॉट लाइक मेजर डिफरेंस नहीं है। पावर शेल जिसको बैश आ जाए तो वो हर चीज सीख लेता है, पावर शेल की अपनी कुछ विंडो स्पेसिफिक कमांड्स हैं, सीख ही लेता है बंदा, कोई मसला नहीं होता। पावर शेल मैंने बहुत सही। अच्छी पढ़ाई है उसके अंदर, मैंने खुद पढ़ाई है पावर शेल, ठीक है। वो उसमें अलग से आएगी, तो पॉइंट इसके तुम्हें बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। आई मीन बोलो भाई, व्हाट मेक्स मी, व्हाट entices मी द मोस्ट इज, I mean, I have the security clearance, so I know that I'll be given the opportunity to work on projects where you require security clearance, right? And जी। I do understand that it is very difficult to find people with the right clearance, right? So I'm सही। coming with, that's one advantage I have. The other advantage I have is, I've already have this fine art of mapping the business requirements with cloud provider requirements, because sometimes I have to do this with AWS or IBM or GCP or Azure, but here I will cancel the other three. I will only focus on AWS, right? सही। Because I'm working for AWS, right? जी। And then the third thing that I have is that, the will, because I know about blockchain. As I said, I can create Solidity contracts, smart contracts and stuff like that on Ethereum, working on some of the open ledgers and some of the private ledgers, like even for the, I'm creating a solution for the Amazon QLDB, the quantum ledger database, which can be utilized, right? So a solution through which we can do and save all the blockchain related data into the QLDB for reporting purposes and for pulling out the reports or for whatnot. So there's a lot of use cases over there. I'm well versed in DevOps and DevSecOps, and because I know how to integrate vulnerability assessments, network web application pen testing, network pen testing, and the WSTG requirements, ठीक है, जो तुमने पढ़ी है CAT के अंदर सब चीजें जी। DevOps से पढ़ी हैं, उसके ऊपर हाईलाइट करो, just highlight all of these things, so it entices me. अगर बोलेंगे भाई पैसे वैसे कितने चाहिए, क्या चाहिए, बोलो भाई 6-figure salary, like, I know there's going to be a lot of learning. What entices me the most is the learning part, right? If you give जी। me 130, 140, I'll be a happy man. जी। If you want to give me more, it's up to you. Okay? I'm not going to say no to it, obviously. Okay? जी। But how I see it is like I have the will, the drive, and the passion to become an architect in the next 1 year. Give me 1 year, and I will show you, where I can take and satisfy the customer requirements. Because like one of the things, as you understand, is like the organization where I'm working right now. मैं नाम नहीं ले रहा जहाँ तुम काम करते हो, तुम बोलो भाई, the most difficult part is satisfying their requirements. If I can do that in that setting, everyone else is a fair game, right? बिल्कुल। It becomes सही। easy for me to handle those customers, because the most difficult customers are the customers that I'm managing right now. These different departments of these different departments, and trust me, it's a challenge. But if you put me there while working for AWS in front of these guys, I have the know-how and the inside knowledge what makes them happy. That's one other thing. So there are pros, a lot of pros for bringing me on board.
there will be one or two cons as well. You know, I need जी. time to learn. I need time to learn. You can call it a con, you know, but for me, it's a pro because I want to learn, right? And as you mentioned here, like on the website, you do invest in all of these things, training and, you know, grooming, mentorship, all of these things. That's exactly what I'm looking for. There's और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? सही. बाकी सिंपल है, जाओ बिस्मिल्लाह करो. I mean, बाकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर. I mean, there's nothing else. और कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें रोकेगी, ठीक है ना? देख लो उसके ऊपर. और जो ना, जो ये पैसे चार्ज कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है ना, जो भी देख रहे हैं, जी. ये तो यूएस में, ये तो यूएस के अंदर ही है ना, ठीक है ना? सही है. ये तो जी. हाँ, तो इनकी जॉब्स जो है ना हर जगह आती हैं, ठीक है ना? ये अगर हमारे जो हुक्मरान है अगर ईमानदार नहीं होते तो ना, क्या ही अच्छी बात थी कि ये हमारे दूसरे ममालिक में आके अपना डेटा सेंटर खोल लेते, ठीक है ना? मगर उसके लिए कानून साजी करनी होती है, सब कुछ करना होता है. ये ये तो हमारा LGBTQ भाई, ये LGBTQ के लिए कानून लिख लेंगे, लेकिन वो कानून जिससे जो है ना करप्शन खत्म होती है वो नहीं लिखेंगे. वो कानून जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा वो नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? करप्शन इसलिए खत्म नहीं करेंगे क्योंकि उनका रोजगार बंद हो जाएगा. और रोजगार लोगों को इसलिए नहीं देंगे, उनको वोट कौन देंगे, किसको दबाएंगे, राइट? ये मसला है ना. तो अगर हमारी यूथ खड़ी होके बोले कि यार देखो कुरान में अल्लाह ये कह रहा है, उनको यूथ को कुरान भी पढ़ना पड़ेगा ना. कुरान भी नहीं पढ़ते ना, बस ऐसे समझते हैं कि इमरान खान के पीछे नाच गाना करेंगे और वो हो जाएगा. ऐसा थोड़ी होगा. तुम जितना नाच ले, उल्टा होके नाच ले, सीधा होके नाच ले, टेढ़ा होके नाच, कुछ नहीं होगा. हाँ, मैं बता रहा हूँ उसको, मतलब कि ये वो सुनता भी नहीं ना बात. देखिए एक और भी मसला है ना, ठीक है? सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. तुम एक फाइन ब्लेंड के साथ जा रहे हो, ठीक है ना? सो तुम्हें जी. वो, मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हें कोई मसला होगा, ठीक है ना? तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरी नजर में, ठीक है ना? अप्लाई करो और बोलो कि भाई वट एवर यू ऑफर टू मी आई विल टेक इट बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न, ठीक है ना? जी. सो बोलो. क्योंकि ऐसा वो भी क्या- मुझे समझ आई है कि मतलब ग्रूम कर रहे हैं और उसके बाद वो खुद ही मतलब सिखाना चाह रहे हैं बंदे को. भाई अमेजोन के अंदर मैंने काम किया है इनके साथ, बहुत मेजर बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया था. मैंने जो इनका स्टार्टअप अंदर देखा, तो वही चीज मैं अपनी कॉलेज में मैंने अपनी सब इम्बेड किया. जहाँ से इंसान अच्छी चीज सीखता है उसको वो करता है, ठीक है ना? जी. तो दीन और सब चीजें मैं कुरान वादी से सीखता हूँ, बाकी मामलात माशरत सब चीजें. लेकिन अगर मैं कहीं कोई अच्छी चीज देखूं कि भाई ये अपने एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट करते हैं, तो जैसे इस्लाम में कहा है ना, बिल्कुल वैसे ट्रीट करते हैं. ये कोई नई चीज नहीं कर रहे, अल्लाह ताला हमें बता चुका है, अल्लाह के रसूल हमें बता चुके हैं. और जिस तरह उस पर कहते हैं कि मेहनत करो, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वही चीजें जो है ना हमने इम्प्लीमेंट की हैं. बच्चों को हैंड्स ऑन ये लोग सिखाते हैं अंदर बिठाकर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तुमने वहाँ 1 साल गुजार दिया, यू विल गो एट अ मच हायर लेवल, ठीक है? और यहाँ पर प्रमोशन सब चीजें आपको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज यहाँ सही है. सारे के सारे देसी काम करते हैं. तुमने वीडियो में देख लिया जी. सारे देसी. भाई गोरों को कोडिंग नहीं आती. लिखो अभी, अगर कोई गोरा बैठा होता है ना, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, द कॉकेशियंस डू नॉट नो हाउ टू कोड प्रॉपर्ली, ठीक है? सही बात. प्रॉब्लम, गो एंड टेक इट टू द बैंक, ठीक है? सही है. डू अ टेस्ट. कॉकेशियंस को बुलाओ, ठीक है ना, देसियों को बुलाओ, ठीक है ना, दोनों. यू विल सी देसी क्या कर रहा हो. ही विल कोड. कोडिंग इज की स्किल. तो तुमसे ये मांगा है. सो इफ यू डू दिस, तुम निकल जाओगे. दिस इज नथिंग एल्स. और कुछ है नहीं बस. और बाकी मैं नहीं समझता कि और कोई चीज है. आई मीन, अगर तुम्हारे ध्यान में कोई चीज है तो पूछो, अदरवाइज तुम तो जब तक नहीं है. तुम्हारे पास टाइम है, तुम बैठे हुए हो, देखते रहो, सोचते रहो, सवाल तुम्हारे जहन में आ रहे हैं, लिखते रहो. आ जाओ मेरे पास. वो उसके पास भी सवाल करेगी, वो इंटरव्यू में तुम्हें बताएगी कि क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या क्या नहीं पूछ सकते. वो भी लेकर आ जाओ, ठीक है ना? तो सही है. जाओ, लेके जाओ और देखो क्या क्या पूछते हैं, क्या करते हैं. एक क्वेश्चन है आपके उससे ऑनलाइन डिग्री के हवाले से. आपने मुझे बोला था ना कि ये ऑनलाइन भी आप ला रहे हैं यूएस के अंदर, तो मैं अभी साइबर सिक्योरिटी की डिग्री कर रहा हूँ यहाँ पे. अगर ऐसा हो सकता है कि मैं वो पॉज कर दूं और जब आप आए तो मैं अपने क्रेडिट ट्रांसफर करवा के आपसे कंटिन्यू कर सकूं. क्रेडिट ट्रांसफर कराना बहुत मुश्किल होगा मास्टर्स के अंदर. अच्छा. अगर तुम CMU से कर रहे हो तो शायद तुम्हारा हो जाता. ठीक है. अच्छा. हाँ, तुम्हारी कौन सी यूनिवर्सिटी, क्या नाम है उसका? सदर्न न्यू हैम्पशायर.
सदर्न न्यू हैम्पशायर। यूनिवर्सिटी जी। कौन सी स्टेट में? न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन मैनचेस्टर, न्यू हैम्पशायर। जी। और क्या डिग्री का नाम है? साइबर सिक्योरिटी। देख रहा हूँ क्या पढ़ा है। नजर नहीं आ रही मुझे, नहीं आ रही? अच्छा, लेकिन इनकी वेबसाइट पे हूँ मैं, तो मुझे कोई लिंक भेजो। देखो मैं इनकी मैं वेबसाइट पे आपको। खड़ा हूँ। मास्टर्स यही है ना? जी जी यही है। हाँ, तो अगर जी। यही है तो मैं अगर यहाँ जाता हूँ और उसको, किस में आऊँगा मैं? किस सेक्शन में आती है? आना चाहिए सर, टेक्नोलॉजी में शायद हो। लेट्स सी। Think so। ये हाँ जी यही वाली है। कितनी फीस है इसकी टोटल? इसकी अभी तो मेरी कंपनी कवर कर रही है 75%। सो मतलब टोटल 2 क्लासेस में लेता हूँ तो ऑलमोस्ट $4,000 जाती है। सो कंसंट्रेशन ऑप्शंस हैं, कैरियर आउटलुक है, ये पढ़ा रहे हैं सारा। जी जी यही पढ़ा है। 23 तारीख को मैं तुम्हें अपना मास्टर्स दिखाऊंगा, ठीक है ना? सही है। तो उसमें जब तुम देखोगे तो उसमें उसमें बहुत फर्क है मास्टर्स के अंदर ना। जी इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं करने को, तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये सारे यूनिट्स हैं, जी जी जी। ये मेजर्स हैं। और उसके वैसे बाद मेजर इलेक्टिव्स तुम फिर बाद में सेलेक्ट करोगे। हाँ ठीक है, जी, हो सकता है, हो सकता है। दिस इज अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है। ठीक है, अगर हो पढ़ते सकता रहो, है अभी तो रोको फिर नहीं। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। जितना ऐसे कर सही लिया है। गवर्नमेंट दे रही है ना तुम्हारा, वही वही दे रही है ना, वही लोग दे रहे हैं, तो करते रहो। जी क्योंकि इन लोग ये बड़े तेज हैं कि ये अपनी यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करते हैं, और उसका जीआई बिल या जो भी तुम्हें मिला हुआ है ना, ठीक है, उसके हिसाब से ये लोग उसकी फीस पे कर रहे हैं ना, राइट? फेडरल गवर्नमेंट जी दे जी रही है ना। जी। हाँ, तो करते रहो उसके ऊपर। अगर वहां तुम्हें खुद देनी पड़ेगी, वहां फेडरल गवर्नमेंट को प्रोग्राम अप्रूव कराने में टाइम लगेगा कि एम्प्लॉयर दे। सो कीप दिस इन माइंड। तभी तुम्हें फ्री मिल रही, करो ना, उसमें क्या मसला है, कर लो। जी सही है। मैं यही मशवरा अब ये कि मैं डबल मास्टर के दिमाग में रखूँ, डबल मास्टर एक ही चीज में होगा। डेवऑप्स में कर लेना। जी सही है सही है। बिग चलिए डेटा हो में गया कर मैं लो, तो। एआई में कर लो। आई मीन आज आप हमारी तो मीटिंग पीएचडी प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे या नहीं? सॉरी क्या? पीएचडी प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी यूनिवर्सिटीज में? अभी नहीं। हमारे पास चलिए। बंदे हैं, डॉक्टर यासिर हैं, डॉक्टर सालिया हैं, 2 और डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर सजमान भी हैं, 5 या 6 डॉक्टर्स हैं, लेकिन अभी नहीं। सही। वो बिल्कुल अप्लाइड बेस्ड होगा, अगर होगा भी तो, लेकिन 2-3 साल के बाद। अभी बहुत काम है यार, मतलब कि उसमें ही बंदा फंस जाता है तो अच्छा खासा वो लग जाता है, जी ठीक है? तो सही बंदा है। थक जाता है। ये जो हमारे पास जो सबसे बड़ा टास्क है अभी, जो है ना हमारा, वो ये है, ये ओएफएस का, ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स। द ऑफिस फॉर सही। स्टूडेंट इज द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंग्लैंड। ठीक है ना? ये इसकी एक्रेडिटेशन हम सबसे पहले कर रहे हैं, बिकॉज जब इसकी एक्रेडिटेशन आपकी होती है तो आप कहीं पर भी यूके में आप डिग्री दे सकते हैं सबको। यू बिकम अ डिग्री अवॉर्डिंग बॉडी। ठीक है ना? सही। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इन तमाम एरियाज में कर रहे हैं जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड है। और अगर तुम चेक जी करो जी कि भाई हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, हमने इसको डेव डोमेन पे रखा हुआ है अभी तक। उसमें जी अगर तुम जाओ एक्रेडिटेशन में चेक करो, तो ओएफएस सबसे पहले जिसका हम काम कर रहे हैं। सही। ये और इसके अलावा 6 और एक्रेडिटेशंस हैं। ब्रिटिश नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक है यूके का, यूके नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, इसकी भी हम करवा रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना? ये यूके का हम्म, गवर्नमेंट का आता है। ये है
ये ऐसे ही मिल जाता है। इसके बाद फिर हमारा एक है बैक, वो है सॉरी ब्रिटिश कंप्यूटर BCS, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी यूके ना, तो जी। ये भी ऐसे ही मिल जाएगा। जो सबसे मुश्किल काम जो है ना, जो सबसे वो है, वो ये OFS का है। ये बॉडी जो है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और सारी मेहनत हमारी इसी के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके अंदर इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंप्लाई करना, टीचिंग के आउटकम्स, स्टूडेंट के आउटकम्स, लैब के आउटकम्स, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिस पे हम काम कर रहे हैं, और जी, इट्स नॉट इजी, ठीक है। बिल्कुल। तो फिलहाल हमारा फोकस यही है। हाँ, रिकग्नाइज होगी, सब जगह रिकग्नाइज होगी, तुम कहीं भी लेके चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, जी, बिकॉज इट्स बाय द यूके गवर्नमेंट। ये सही है, सही है। ओके, चलो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। तो जिसको भी आना है वो 23 तारीख को जो हमारा इवेंट है वो alnafe.com/events में जाए, ठीक है, और alnafe.com/events में जाए, और वो 23 तारीख का जो इवेंट है उसके लिए रजिस्टर कर ले अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ से उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, whatever he wants to see, और वो इस इवेंट में आ सकेगा इंशाल्लाह। ओके, अगर आप को रजिस्टर करना है तो आप यहाँ से जाकर alnafe.com/events पे जाएं, व्यू डिटेल्स, और ये हमारा 23 तारीख को पाकिस्तान के 9 बजे सेशन है, ठीक है। वेबिनार है हमारा लाइव, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करूंगा, आप जाके उसको ज्वाइन करके वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है जी। ओके। ठीक है हारिस, अल्लाह का नाम लो, तुम जी, सवालात लिखो, और भी तुम्हारे ध्यान में कुछ सवालात आते हैं, कुछ आते हैं, कम बैक टू मी, और उससे भी बात करो, बोलो भाई मेरे पास प्रिपरेशन सारी है, अब बाकी पूछो क्या होता है, अल्लाह मालिक, ठीक है। चलो भाई, ओके, ओके। दूसरे को लेकर आओ, जो जर्मनी से आ रहा है। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, किधर हो भाई तुम, कहाँ पर हो, कहाँ गया यार जर्मनी वाला, भाग गया यहाँ से, क्या हो गया इसको। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा भाई, मैं तुमने तुमने जो जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैं उसको खोलता हूँ, ठीक है ना। सो लेट्स ओपन दैट, एंड मैं जो तुमने लिंक भेजा था मैं इसी को खोल के तुम्हें दिखाता हूँ। जरा दोबारा से लिंक शेयर करो मेरे साथ, वो क्या था, ये यही वाला है, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ब्लैकफिल, यही है क्या है, भेजो, मैं इसे दोबारा से भेजो। अच्छा, यहाँ पर जो तुम्हारी जो जॉब है वो है, तुम ऑलरेडी माशाल्लाह यहाँ पढ़ने के बाद, मैं देख लिया मैंने, ऑलरेडी तुम यहाँ पढ़ने के बाद जो है काफ़ी मतलब कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की तुम जॉब सिक्योर कर चुके हो माशाल्लाह, ठीक है, हमारे साथ पढ़ रहे हो, हमारी डिग्री भी चल रही है। अब तुम्हें यहाँ पर तुमने अप्लाई किया है वो है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट फॉर क्लाउड IoT एप्लीकेशंस। सो उनको चाहिए एक सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट फॉर क्लाउड एंड IoT एप्लीकेशंस टू जॉइन अस इन द बैटल टू एलिमिनेट इंजरीज इन द वर्कप्लेस। सही है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सोल्यूशन है, मेरी नज़र में क्या चीज़ हो सकती है, मैं तुम्हें अब्दुल्ला कह देता हूँ, अब्दुल्ला, ठीक है, जो तुम्हारा नाम है, सभी सारे यहाँ अब्दुल्ला है, सब अल्लाह के बंदे हैं, जिसने कलमा पढ़ लिया वो अब्दुल्ला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, अवर क्लाउड सॉल्यूशंस लेवरेज MSA मैनेज सिक्योरिटी applications best in class equipment to enable a comprehensive view of safety and compliance within these markets. As member of the safety to team, IO team, you'll work on compelling projects like live monitoring of workforces in hazardous areas, fleet management for market leading MSA safety products, on-scene monitoring for the global fire services, and more. काम तुमसे क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम इन सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज थ्रेट मॉडलिंग एंड पेन टेस्टिंग। अब्दुल्ला, तुम बात कर सकते हो या तुम बात नहीं करना चाहते, सिर्फ किस तरह से बात करोगे, क्या कहते हो भाई तुम, कैसे बात करना चाहोगे, सिर्फ चैट पे लिखोगे मुझे। कुछ लोग हैं जो अपनी प्राइवेसी रखते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, प्राइवेसी रखो भाई, ठीक है। सो जो तुम्हारा पहला जो उन्होंने सवाल भेजा है कि भाई हमारे पास एक ऐसा बंदा हो कि जो
इस पे काम करे, supporting software development team and security related activities such as threat modeling and pen testing. तो तुम भी DevOps पढ़ रहे हो, तुमने भी CAT में सारी labs की हुई हैं, DevOps भी तुम कर रहे हो, तो तुम उनको बताओ कि भाई कि I'm more than capable in terms of performing vulnerability assessments, web application pen testing, network pen testing, and especially if we are developing applications, then evaluating those applications with respect to WSTG, web security testing guide requirements. Like if those are firmware testing, because you mentioned IoT, normally IoT runs on either mobile applications or firmwares. If it's a mobile application of firmwares, then yes, I can do that as well in line with FSTG and MSTG. Okay? 1 minute सबर करना जरा. जहां पर तुमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमने बतानी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज तुमने इनसे पूछना है कि भाई आई एम वेल वेयर ऑफ WSTG रिक्वायरमेंट्स, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड, सो आई कैन असिस्ट योर डेवलपर्स इन टर्म्स ऑफ हाउ टू सिक्योर, how to create secure applications, right? So for that, we will be using WSTG OWASP, right? OWASP requirement. So that's one of the requirements that is being used. So तुम इसके बारे में बता सकते हो, तुमने सारी labs इसके ऊपर की हुई. Next जो labs हैं जो हमारे offensive security में आती हैं, वो हैं basically the MSTG and the FSTG, right? The MSTG and the FSTG तुमने बताना है, वो ये बताना है कि FSTG, ठीक है ना, that is for performing, testing of applications in line with, I would say, firmware security testing guide. So if I go here, यहाँ पर था, 1 minute सबर करना, there is a ये. So दुनिया में जितनी भी टेस्टिंग जो हो रही है ना, जो IoT firmwares की जो लोग करते हैं, it is in line with the FSTG firmware security testing guide requirements, right? Which should be mentioned here somewhere. We go back. FSTG. एक मिनट अब्दुल्ला सबर करो. अच्छा, let me look for the real link. ठीक है ना, एक माइटर अटैक भी है और firmware. Okay. Yeah. So तुमने उनको बताना है कि भाई जो firmware security testing guide है उसके मुताबिक, I can certainly help the your teams to ensure that whatever firmware we are running on those IoT devices, because it is mentioned in the job description, ये जो हमारे job description में लिखा हुआ है, supporting software development, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये लोग ना multiple solutions बना रहे हैं IoT की. Normally IoT का जो device होता है, it's a very small device, और इस device के ऊपर ना limited RAM, CPU सब चीजें होती हैं. Sometimes it is connected to RFID devices, sometimes it is picking up different Bluetooth or whatever, Wi-Fi light, or there are different protocols, right? So तुमने इसके ऊपर बताना है कि भाई, if it comes to that, then I can assist that team in terms of making sure that, I can perform all the key aspects of obtaining the firmware, analyzing the firmware, emulating the firmware, performing dynamic analysis, runtime analysis, binary exploitation,
And this is the primary thing with this, which is used for all Internet of Things, because it comes with the embedded OS. So I need to understand your product. What is your product? What is the CPU architecture of the product? What is the operating system platform? I need to know that. What is the bootloader configuration, the hardware schematics, the data sheets, the line of codes, estimations, like how many do we have? Normally, it's a very tight system, छोटा होता है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं होता. So, do we have any source code repository location where we can review this thing? Can we perform static code analysis, dynamic code analysis? Are we using any open source licenses in there, like open source libraries? Because then we have to take into that as well. Design and data flow diagrams will explain to me how I can do an effective threat modeling, so on and so forth, right? And we can also put these things on basically through rigorous testing as well. So to answer your question, as it relates to one of the job key requirements, right? I can absolutely help your team meet all of the key requirements, right? Abdullah, okay? So in terms of performing penetration testing, the same way I can do the MSTG as well. That is something I'm learning right now. And as we move forward, I'll be in a better way to explain to you all of these things. इसके बाद जो उसने तुमसे बोला है, नहीं तुमसे लाइव कुछ नहीं देंगे, they won't give it to you. अगर दिया तो तुम उसको हैंडल भी कर सकते हो, but they won't give it to you. क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, ये बड़ा मजेदार चीज है. इसमें मैंने तुम्हें IC 62443 की जो क्लास थी, तो खत्म हो गई, हम PCI-DSS कर रहे हैं. उसमें तुम लोग को मैंने क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के ऊपर बताया था कि जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या होता है. सो गो बैक एंड लर्न क्लाउड सिक्योरिटी जीरो ट्रस्ट मॉडल, राइट. ये बहुत मतलब कि ये वो चीज है कि जो दुनिया में सब जगह यूज हो रही है, ठीक है. हर क्लाउड प्रोवाइडर दुनिया में जो है ना इसको यूज कर रहा है. अगर तुम AWS में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, अगर तुम AWS भी लिखोगे तो even they are using it. Everyone is using the zero trust model. So you can mention, okay, assuming that you are using an IoT solution, as it is mentioned, you might be using possibly, because दुनिया में जितने IoT providers हैं ना, वो AWS के ecosystem के ऊपर ही IoT पे काम कर रहे हैं, ठीक है. तो तुम देख सकते हो या तो AWS या Azure. IBM के पास इतनी चीजें नहीं है. IBM का बस एक एज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है और GCP के पास बहुत छोटी सी चीज है. तो तुम देख सकते हो कि हमारा जो IoT का प्लेटफॉर्म है, ये मैंने बनाया इसलिए था एडवांसमेंट ट्रैक, बिकॉज आई नो, मैंने इंडस्ट्री में काम किया था ना. प्राइमरली दो बड़े वेंडर्स हैं. AWS सबसे बड़ा वेंडर है, इसके पास चीजें ज्यादा हैं, they have more service lines. So बोलो भाई, I understand that you are working on the safety and security of the industrial systems like hazardous places, mines, shafts, places where there are like toxic chemicals or whatever the case is, right? So all of that data, where is that data going? Do you have any, what are the connectivity and control services? क्या है? तो मुझसे पूछोगे भाई, do you use, where is that all of this data coming from these different IoT devices is going? It has to go to some kind of mothership, right? The device data can go from these different devices over to basically a collector, and then from there it goes to one of the edge devices, goes to the edge on the cloud, and then from there we are able to then look into the data, right? So where is that data is going? Like, we need to understand, because where is that core data going? So you might be using I need to understand this, because where are we performing those IoT data analytics? Where are we reviewing those IoT events? What kind of, as a security consultant, my goal would be to understand the architecture of the solution from the hardware level to the software level to the cloud level, right? It is connecting to the cloud. So it must be connecting to some kind of, either through a Wi-Fi device, jumping to the Wi-Fi device, and then from there going to the cloud, or it might be just going directly to the cloud, depending on the device, through a mobile SIM data, whatever, right? So how are we protecting those things? How are those different devices connecting with each other? How they're authenticating to each other? Are we using blockchain, smart contracts to validate that this device
at this mine or this hazardous place can connect with this device at this place, and they both can connect and exchange data with each other, because we need to establish authentication, and identification properly, right? Otherwise, things can be compromised, right? So we need to make sure, how are we doing this thing? How are we performing IoT core management? Do we have any defenders, device defenders on these IoT applications or softwares or these things? So these are all the things I would like to know, because the well-known platforms are either AWS or Azure, which has the most diversified, I would say, IoT-related data analytics and data security platform. Or you guys may have developed it yourself. So I need to understand more. Abdullah, tumne ko batana, I need to understand more, in order for me to design a cloud security architecture and design. I mean, I know that you guys already have it. तुम उनको बताओ. You guys already have it, because ये जो company है ना, मुझे एक चीज याद आ रही है. एक मिनट सब्र करो. If I'm not mistaken, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ. मेरा जो स्टूडेंट है ना, अहमद अली खान, जो PwC में, उसने एकदम एक टाइम पे उसने मुझे कोई चीज भेजी थी. अगर मुझे वो मिल गया ना, तो इट्स दैट थिंग. मैं देख रहा हूँ. सब्र करो यार. अगर मुझे वो चीज मिल गई ना, तो आई थिंक वो चीज तुम्हारे पास है, क्योंकि इसका नाम मैंने सुना हुआ है. ये शायद PwC के साथ काम कर रहे हैं. आ गया, एक मिनट. So नहीं, ये नोजूमी है. नोजूमी जो है ना, एक अलग चीज है. मैं इसका देता हूँ. ये मेरा स्टूडेंट था, अभी है, वो PwC में काम करता है. इसने मुझे एक चीज भेजी थी, तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ तुम्हारे उसके ऊपर. इन्होंने ये एक पूरा जो है ना सोल्यूशन बनाई इन लोगों ने, जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, IoT के ऊपर. और मैंने तुम्हें भेजा है. मैं तुम्हें खोल के भी दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? मैं दूसरे कंप्यूटर पर खोल के दिखा देता हूँ. सब्र करो. That will give you an idea कि मैं तुम्हें क्या चीज, वो सेंड हो रहा है, काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है. जस्ट गिव इट अ मिनट. और मैं इस वेबसाइट को भी देख लेता हूँ कि ये क्या करते हैं. इनका काम क्या है ना, मुझे अगर इनका काम पता चल जाए ना, तो बेसिकली ये काम करते हैं. ओके 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 ओके. सो इनका जो काम है, इनका काम अब मुझे समझ आएगा कि क्या कर रहे हैं. सो ये लोग जो हैं, हाई राइज सेफ्टी सिस्टम्स, यानी कि सेफ्टी सिस्टम्स इन अ मॉडर्न हाई राइज एलिवेटर. The Greek mathematician Archimedes is generally credited for creating the first elevator-like device in the 3rd century BC. Okay, so engineered for safety. So ये बनाते हैं. Electrical components include elevator controllers, sensors, and software systems. The elevator controller serves as the brains of the system. Sensor monitors safety-related functions like car speed and position, and door lock state or access panel position. And they send the data back to the controller. Controller के पास data जाता है. The software systems provide independent assessments to validate redundant sensor systems. इसको थोड़ा देखते भी हैं कि क्या करते हैं, ताकि अब्दुल्ला मुझे तुम्हारी कंपनी का समझ आता है, जहाँ तुम इंटरव्यू देने जाते हो. थोड़ा देखते भी हैं कि क्या करते हैं, ताकि अब्दुल्ला मुझे तुम्हारी कंपनी का समझ. एक मिनट. सो यहाँ पर why is it picking this up? Should not be. Okay, this is better. So इसको हम चेक करते हैं कि क्या करते हैं, ताकि हमें पता चले, ताकि और मैं तुम्हें अच्छे पॉइंटर्स बता सकूं. So इसको हम चेक करते हैं कि क्या करते हैं, ताकि हमें पता चले, ताकि why is my voice अच्छे पॉइंटर्स बता सकूं.
आवाज मेरी मल्टीपल हो रही है. Give me 1 minute. आवाज मेरी multiple है. Okay, bismillah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके, सो मैं यहाँ से इसको चला. एक मिनट सब्र कीजिएगा. अच्छा, मैं जरा एक चीज देख लूँ क्योंकि मसला हो रहा है मुझे. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने से पहले कुछ जरा वेरीफाई कर लूँ ताकि जब मैं शेयर करूँ तो ऐसा कुछ हो नहीं. ओके, दैट इज द प्रॉब्लम. नाउ आई हैव हर्ड. ओके, सो अब्दुल्ला, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? मैं इसको देखता हूँ कि क्या करता है, ठीक है, ताकि मुझे अंदाजा हो कि व्हाट डू दे डू. ओके, यस, ओके, ठीक है. Today's urban skyline, defined by soaring towers, architectural wonders made possible by Otis. The modern high-rise elevator is more than a mode of transportation. It's a high-tech system built for safety. How do the safety features of these precision-engineered systems work? Let's take a closer look. Suppose an elevator exceeds its rated speed. The controller, the brains of the system, immediately recognizes there's an issue and modifies current to the machine to slow the elevator. If that isn't sufficient, the controller applies the machine brake. Otis elevators feature modern friction brakes, disc or drum. In the unlikely event that an elevator continues to overspeed, elevators have a governor as an extra line of defense. When activated, the governor activates the elevator safety system. These clamp-like devices are located on the elevator car itself. When activated, they grab the hoistway rails, bringing the elevator to a controlled stop. As an additional layer of safety, elevator systems are equipped with buffers. Located at the bottom of the hoistway, these giant shock absorbers dissipate the remaining energy of the descending elevator. In a world of ever taller buildings, Otis elevators provide superior comfort as they safely transport passengers on their journey skyward and back again. सो ये जो तुम्हारी कंपनी है, ये सेफ्टी एलिवेटर सिस्टम्स बनाते हैं. एक चीज तुम्हें तो पता चल गई. लो राइज, मिड राइज, हाई राइज, एस्केलेटर, मूविंग बॉक्स, डिस्पैचिंग, हर किस्म की कंपनीज में काम कर रहे हैं. एयरपोर्ट्स में भी हैं, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, मेट्रो, सब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काम कर रहे हैं. इनकी सर्विसेज हैं ऑटिस सिग्नेचर सर्विस, ऑटिस वन, न्यू एलिवेटर वारंटी. तो इनके पास 3-4 चीजें हैं. ऑटिस सिग्नेचर क्या चीज है, ऑटिस वन क्या चीज है. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, राइट. और ये किस किस कंट्रीज में काम कर रहे हैं. ये अमेरिका, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, सब जगह पर हैं. सो दे आर ऑल ओवर द प्लेस, सब जगह काम कर रहे हैं. सो दिस इज अ बिग कंपनी इन प्रीटी मच ऑल द की कंट्रीज यू कैन से. ठीक है, एशिया पैसिफिक, अमेरिका, सब जगह यहाँ पर काम हो रहा है. एक मिनट सब्र करना. सो तुम्हारा जो काम है वो इस सोल्यूशन के ऊपर होगा. ठीक है ना. इस सोल्यूशन का स्कोप ज्यादा है क्योंकि देखो ये इनका पूरा एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, कनेक्टेड सर्विस पावर्ड बाय IoT. ठीक है ना. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, मूव बियॉन्ड टू कनेक्टेड सर्विसेज पावर्ड बाय इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो ये सब चीजों को वो कर रहे हैं इस पे. ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, प्रेडिक्टिव इंसाइट्स. ठीक है.
एडवांस 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है, क्लाउड में डेटा जा रहा है, तो इसका मतलब है यही वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं से ये वाईफाई से या मोबाइल से कनेक्टेड है, और उनके उसके पास क्विकली जा रहा होगा उनके इंजीनियर के पास डेटा कि कब इसको रिव्यू ठीक करना है, क्या करना है, कब इसकी सर्विस है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो तुम इसमें इनको एक आइडिया देना अब्दुल्ला, मेरा मशवरा है, ठीक है। तुम बोलना कि भाई देखो, तुम उनको बोलना कि one of the things that I saw might be a security vulnerability is I'm not sure how you are doing the authentication of these devices. Like it is running on Wi-Fi, or it might be Wi-Fi Lite or Zigbee or some other protocol, right? But how do we assure that whatever is being connected to the portal, to our portal, is the right device, right? To the cloud. Clouds, when it is sending the monitoring of the critical elevator system cab, right? So when the cab is connecting to the machine room and the hoistway and the pit, right? How is all of this data is going through? Are we using any kind of blockchain for identification and authentication to see that we are validating, or IOTA? Read about IOTA, ठीक है ना? IOTA is the MIT protocol, basically. And what IOTA does is कि it is used fundamentally for these Internet of Things. ठीक है? अब्दुल्ला, तुम्हें आवाज आ रही है ना मेरी? So तुमने बताना है कि भाई IOTA is there. It is used for essentially Internet of Things. ठीक है भाई? बैठे हो ना, तो मुझे मैसेज किया तुमने. तो तुमने बताना है कि भाई, I mean, how are we exchanging the data? Because the data is the key element within Otis, right? Your solution. If the data that we are receiving is corrupted or something happens to it, that can impact our solution significantly. I mean, I don't know whether if you guys have done your penetration testing or something like that, but one of the things I see is that, you should use IOTA, to re-engineer your technology for both value and data. This is one of the key things used for basically many things, and specifically in the Internet of Things business, right? So ये तुम उसके बारे में इनको बताओ थोड़ा सा. इनकी जो दूसरी solution है वो है products में ना, Otis One और Otis Signature Service, ठीक है. ये दो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, और ये उनका मैनुअल है, ठीक है ना. और दुनिया की हर बिल्डिंग में तुम्हें नजर आएगा, अंदर हो बाहर हो कहीं पर भी हो, ठीक है ना. तो ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कि ये और भी दूसरा पीछे काम कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट पे नहीं चलती, ठीक है ना. तो सर्टिफाइड OEM पार्ट्स हो गए. तो देखो ये जो चीज है, तो बोलो कि आप कैसे, आई मीन हाउ आर यू डूइंग दिस थिंग. तो उनको बोलना कि भाई, हाउ डू यू इंश्योर दैट whatever service we are performing is performed by the right certified technician. Now here's the thing जो तुमने बतानी है, ठीक है ना उनको. It mentions on your website, no one knows your equipment like Otis. I mean, how do you ensure that it's a certified OEM part? How does the client ensure? How do you do this? Are you doing it like this, like where we have, some kind of blockchain application for supply chain purposes, right? यहाँ तुम अपना ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक के बारे में बताओ, जो तुमने पढ़ा है सारा. तो बोलो भाई, are you doing it like this, that whatever we are getting it from the source, we have a block, right? Or there is another thing कि जिसे कहते हैं AWS, blockchain PwC, right? There's a very good, मैंने PwC के साथ जो काम किया था ना, उसमें बड़ा अच्छा वो था, एरोस्पेस के अंदर था वो, PW blockchain aerospace. Wait a minute. So तो इसमें एक बड़ा important चीज है तुमको बताना कि how blockchain can improve safety industry, right? So one of the key things I would suggest is like parts traceability. Where are the parts coming from? You mentioned on your website that it is coming from certified OEM parts. How do we ensure and give the satisfaction to the customers, that to our clients, that this is a certified OEM part? Right? And then that can be done through blockchain. Technician and identity credentials. You mentioned on your website that mechanic expertise in specialized roles. How do we confirm that these guys, the mechanics who are coming, their identity is and credentials are verified? And then location and type of services performed. How do we ensure that
that the services that we performed, are they really the ones that we're looking for? I mean, the ones that the customers need. And then if we put it all together, can we provide a real-time snapshot of elevator configurations and services performed across all the fleet, across all the buildings and the physical assets that they have? ये अब्दुल्ला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमने उनको बतानी है, ठीक है ना? तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, ठीक है ना? ये चीज तुमने उनको बतानी है और फिर बताना है सपोर्ट एंड एनहांस सेफ्टी iOS ऑन 27,000। देखो कैट आ गया ना वापस, तो अगर तुम सिर्फ वो पढ़ोगे तो नहीं कर सकते, तुम्हें देखो इंडस्ट्री पढ़नी है ना। तो ये किसी को समझ ही नहीं आता अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई देखो प्लीज यार इंडस्ट्री पढ़ लो, इंडस्ट्री पढ़ लो, बोलते मैं क्यों इंडस्ट्री पढ़ूं, मुझे डेटा साइंस में जानना है, मुझे नहीं पढ़नी। उनको भाई यार तुम तजवीद तो पढ़ो पहले। कैसे? नहीं मैंने कुरान पढ़ूंगा। भाई तुम कैसे पढ़ोगे यार, तुम पहले तजवीद तो करो ना यार। नहीं मुझे तजवीद नहीं पढ़नी, मैं सब गलत पढ़ूंगा लेकिन मैं वो अपनी मर्जी से करूंगा। बस वही बात है ना, मसला यही है सारा। तो भाई बात यह है कि तुम्हें उनको बताना है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, इस इंडस्ट्रीज के अंदर हर जगह के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम तुम्हें कवर किए, ठीक है ना? तो हर जगह के स्टैंडर्ड्स ये तमाम इंडस्ट्रीज के, तुम इसके अंदर एरोस्पेस या सेफ्टी या जिसमें भी तुम यहाँ घुसे हुए हो, ठीक है ना, ये ICS के इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर जहां पर भी हो, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं। उनमें से एक स्टैंडर्ड ISO 27000 का है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो बोलो कि भाई program with a strong focus on IoT software as a service architecture. Bolo, absolutely, I can do it. But before I can do this thing, I would go further and say your platform is in the cloud, because it is mentioned on your website, your platform is in the cloud, right? Because it says that all the data goes into the cloud, right? On the Otis one, which is mentioned here, that the Otis one connects the data to the cloud. In the cloud, there's not only 27,001, but there's also 27,017 and 18 as well, right? Which is not mentioned in the job. But I would go further and say 27,018, 17, and 18 for cloud security and cloud privacy, because we have to secure that data, right? Be an active member of the information system management team. Absolutely, yes. Performing monitoring and review of the security events, SIEM, architecture and software support. इसमें तुम मुझसे बोलना कि भाई I need to understand the events. What kind of events are being generated? Every SIEM events are different. The industry where I've worked in, the clients I've worked for, they come from banking or financial services or consulting or whatever, right? They have different SIEM reports. Here, it's a completely different thing. It's all about the health, the safety, some red alarms, like where is the threshold where we establish that something is going wrong. All of these things. Demonstrate ability to communicate professionally, effectively in written or oral format, provide proven ability to analyze and solve technical problems, right? यहाँ तुम्हें SDLC के ऊपर CISSP में तुमने सारा पढ़ा हुआ है। यहाँ तुम्हें जो है ना तुमको बता दिया है, तुम बताओ कि भाई क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर VA करना, vulnerability assessment करना, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करना, नेटवर्क पेन टेस्टिंग करना, सारा काम मुझे आता है। vulnerability management experience के ऊपर लिखा हुआ है। Demonstrate ability to work independently and with guide is only the most complex situation. तो ये तुमसे कह रहे हैं कि भाई तुम्हें खुद अपना मर्जी से काम करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है ना? तो ये सब चीजें बताई हुई हैं। This is all something very वो, there's nothing in there. ये देखो उन्होंने भी लिख दिया ऑटोमेशन DevOps डाल दिया अंदर। Infrastructure operation using automation tools such as Ansible or comparable tools like Chef, Puppet, whatever they're using for automation purposes. ये पूरी ये भाई जो जर्मनी है ना सारा चलता ही लिनक्स के ऊपर है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं, there's nothing else, और कुछ है नहीं इसमें। हमारा इंटरव्यू इख्तिताम पे पहुंचा, कॉन्फिडेंस से ले जाओ, पढ़ो उसके ऊपर। मैंने तुमको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, कुछ अच्छे पॉइंटर्स भी बता दिए जिसमें तुम उनको एंगेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट। कंपनी बहुत बड़ी है, इट्स अ ह्यूज कंपनी, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे पास रेफरेंस आएगा, मैं अच्छा प्रोवाइड कर दूंगा तुमको, ठीक है ना? तो डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह कोई पाकिस्तानी भी शायद यहाँ काम कर रहा है कामिल के नाम से, ठीक है? तो ये इनके पास बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। सो आई सॉ अ पाकिस्तानी नेम लाइक अ मुस्लिम नेम, कमीलो, कामिल, ये रहा, ठीक है ना? तो ये काम कर रहा है इसके अंदर और बाकी सब लोग हैं, ठीक है ना? सो देयर इज नथिंग एल्स। कोई सवाल है तुम्हारा भाई अब्दुल्ला?
उसके लिए तुम मुझे कॉल करो, आई विल टॉक टू यू, ठीक है ना? सही है ना? आई वुड लाइक टू सी कि तुमने कौन सा रेज्यूमे, हमने कौन सा तुम्हारे रेज्यूमे बनाया था, तुमने कौन सा जमा कराया था, ठीक है? मुझे भिजवाओ, देना इंशाल्लाह, ठीक है ना? चलें चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी अमेजोन की और इस कंपनी की, तो आप लोग जाएं, मेहनत करें। मैं आप सबसे जाते जाते यही कहूँगा कि ये जो एडवांसमेंट ट्रैक्स है ना, ये इंडस्ट्री के हिसाब से हमने बनाए, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज द मोस्ट एडवांस ट्रैक्स दैट एनीवन कैन स्टडी। मेहनत करोगे, सही तरह स्टडी करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो। मेहनत नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो जो है ना, तुम लोगों को मुश्किल होगी, आगे नहीं बढ़ सकोगे। सो मेरा सबके लिए मशवरा है, मेहनत करो, पढ़ो, आगे मेहनत करो, और ये सारी चीजें तुम लोग रोक नहीं सकते। यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, राइट? रुक नहीं सकते, रुक गए तो पीछे रह जाओगे, बिकॉज जो है ना, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें आप, पाकिस्तान में ये लोग इस तरह के काम करते हैं कि जिनका तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको जो है ना, स्टार्टअप पाकिस्तान का मुझे कोई किसी ने भेजा, तो ये हाल है इस मुल्क का कि तालीम और हुनर साथ साथ। इसमें वो लोग हैं जिनका तालीम से कोई, जिनका स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई क्या सिखा रहा है, कोई क्या सिखा रहा है, ये इन्फ्लुएंसर्स है सारे, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, मतलब कि दे डोंट नो एनीथिंग, ठीक है ना? कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, लेकिन अगर किसी को बोलो ना कि भाई कि कौन सी चीज पढ़ के मैं आगे निकल सकता हूँ, उसका सवाल किसी के पास नहीं। ये सारे वो हैं जो कि बस बन गए, मतलब कि इनकी बड़ी फॉलोइंग होती है भाई, लोग इनको बड़ा देखते हैं। तो बेसिकली जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तालूत को बोला, बनी इसराइल को ना, कि पोजीशन पे उसको बिठाओ जिसके पास ना जिस्मानी और जहनी काबिलियत हो और इल्म भी हो, तो वो उस पोजीशन से रिलेटेड होता है। दे हैव नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दीज थिंग्स। उसकी पोस्ट में पढ़ रहा था, नीचे उसमें लोगों ने लिखा होता है इनका किसी से कोई तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है, सब ऊपर नीचे हैं सब लोग, ठीक है, मगर सबको बना दिया वहां पे। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सही लोगों को अगर आप सही नहीं बिठाओगे तो गुमराही गुमराही रहेगी और अजाब आता रहेगा, यही होता रहेगा, ठीक है ना? सही है। चले इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं, हम लोग कल मिलेंगे। 2-3 सवाल मैं ले लेता हूँ ऐसे जी। जमाल शेख, क्या सवाल है आपका? बिस्मिल्लाह करें। उस्मान, मैं तुम्हें भिजवा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पर, मैं तुम्हें भिजवाता हूँ जी। उस जमाल शेख बोलिए, क्या क्या अस्सलाम सवाल? वालेकुम फैसल भाई। हेलो फैसल भाई, आवाज आ रही? जी जमाल शेख, फैसल भाई, छोटे छोटे 2-3 सवाल है बस। एक तो मुझे एक्सेस मिल गया है पाइथन प्राइमर में और लिनक्स में, जो जो चीज़ें आपने डाउनलोड उस वक्त करवाई है, तो अभी काफ़ी अपडेटेड वर्जन है, तो मुझे वो अपडेटेड वर्जन ही डाउनलोड करने या वो वाले ढूंढने, एक ये सवाल है। वही और सब एक ही सब। जमाल शेख, तुम कौन से वाले, ग्रीस वाले? जी जी जी। वही है सब, वही, उसी को यूज कर लो, डजेंट मैटर, कुछ नहीं होता। अच्छा, चलें जी, शुक्रिया। और दूसरा सवाल सर ये है कि 17 तारीख को जो आपका लाइव सेशन हुआ था, क्लास लिया था आपने, मुझे खाना बनाना था तो मैं मिस कर गया हूँ, तो मुझे वो वीडियो नहीं मिल रही। उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की थी किस पढ़ाई कैसे करनी, और तो मुझे वो चाहिए था वो। वेबसाइट पे रखी हुई है, मैं अलग से डलवा भी रहा हूँ, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? पोर्टल में मिल जाएगी, सब जगह मैं डलवा भी दूंगा। अगर आप वेबसाइट पे जाएं, यूट्यूब पे जी जाएं, आप लिखें उसके ऊपर, तो आपको वहां से भी मिल जाएगी। मैं उससे बोल दूंगा, क्या मैं नाम है इसका? मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, और आपके सपोर्टेड टीम से भी मैंने 2 दिन बात की है, मुझे अभी तक मिला नहीं ना, तो आप मिल गए मुझे आज लाइव, तो मैंने कहा आपसे ही पूछ लो। मैं अभी निकाल के दे देता हूँ आपको, ठीक है, इंशाल्लाह। जी बहुत जी, शुक्रिया। अहमद चौहान साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, मेरा सवाल ये है कि मैं एक ऑलरेडी फ्रीलांसर हूँ, $3000 अर्न करता हूँ पाकिस्तान में, और मुझे अर्निंग का कोई मसला नहीं है। लेकिन बस ये है कि पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मेरे पास 3 से 4 घंटे फ्री आते हैं, निकलते हैं, जिसको मैं ज़ाया नहीं करना चाह रहा। तो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं रिमोट जॉब के हवाले से ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे से वालिद अकेले हैं, मैं उनको छोड़ नहीं सकता, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, तो मैं कभी मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब मुझे जो आपसे मशवरा चाहिए कि मेरे जैसे लोग जिनको पैसों का मसला नहीं है, टाइम काफी है और पढ़ने का बड़ा दिल चाहता है, क्लाउड भी मैं यूट्यूब से पढ़ता था, तो मुझे सिर्फ एक मजा आता है पढ़ने का, सिर्फ शौक है,
तो मैं क्या करूं, किस तरह आगे जाऊं और मैं अपने इलाके के इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह इनेबल और एम्पावर कर सकूं कि मैं उनको बताऊं कि मैंने यहाँ से पढ़ा है और मैं फिर आगे डिलीवर करूं, लोगों को बताऊं एआई पढ़ो, क्लाउड पढ़ो या डिफरेंट जो आप टेक्नोलॉजीज बता रहे हैं मैं वो पढ़ूं। तो काइंडली इसमें रहनुमाई फरमाइए, जज़ाकल्लाह। भाई देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो कि तुम $3000 कमा रहे हो, ठीक है ना। बहुत सारे वो हलाल है हराम है क्या है, आई डोंट नो। सर वो Amazon PPC की एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज देता हूँ मैं। सब वो ऐसी बेकार का काम है, ठीक है ना। सर सही है, वही ठीक है ना। हाँ वो तो वही ना, दिस इज ऑल, पता है कि वो दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में आगे पीछे तोड़ मोड़ के करते हैं, वो कोई लॉन्ग टर्म कुछ नहीं है। इसे अपवर्क पर एजेंसी है मेरी, अपवर्क पर एजेंसी। एनीवे मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। ऑलराइट 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 गो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें काम करना है, जो तुम्हें क्या पढ़ना है क्या करना है, इससे पहले कि तुम किसी को पढ़ाओ पहले तुम खुद तो पढ़ो, एग्जैक्टली। ठीक है ना। अगर उसके लिए तुम्हें सबसे पहले जो है जा करना डेवऑप्स का ट्रैक पढ़ो, डेवऑप्स के ट्रैक में समझो कि क्या चीजें क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अच्छा जो डेवऑप्स का बंदा होता है, जो बहुत समझदार होता है, तेज होता है, वो $3,000 से $4,000 घर बैठ के आराम से पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठ के कमा सकता है जिसको। और अगर बाहर जाना है तो बाहर जाने के भी रास्ते खुले हुए होते हैं। ये जो तुम लोग सारे काम करते हो ना, ये जो जितने भी हैं, ये जितने भी जिनको मैंने सारे फनकार दिखाए थे अभी, सारे जो बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे जो है ना, वो अमेजोन और उस यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाते हैं। वो भी पैसे कमाना जायज नहीं है, इट्स नॉट हलाल, इट्स नॉट हलाल। आई मीन मुझे वो दे दो, ठीक है, मैं तो स्कॉलर बन रहा हूँ ना, मुझे कोई स्कॉलर खड़ा करके लाके तो दलील, मुझे हुज्जा दे, दलील दे के हलाल है, मैं ठीक है सही है हलाल है भाई, मुझे दलील दो, नहीं दे सकते, ठीक है। द पॉइंट इज के तुम्हें जो है ना, अगर अपना कैरियर बनाना, सब कुछ करना है, पहले तुम अपने आप को खुद बनाओ, फिर तुम किसी को बोल सकते हो कि देखो यार मैं बना, तो मैं इस तरह से तुम बन सकते हो। उसके लिए तुम्हें पूरा पाथवे फॉलो करना पड़ेगा। पाथवे सारा एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। जाओ वेबसाइट पे जाके देखो, डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ सकते हो, ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक पढ़ सकते हो। पहले खुद पढ़ो, खुद अपने आप को करो, फिर तुम दूसरों को कुछ करा सकोगे। जब खुद नहीं हो तो फिर दूसरों को क्या करोगे, राइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को इसलिए दावत देते थे बिकॉज ही हैड received the message. So first you have to receive the message yourself, then you can give dawah to someone else. Otherwise there's nothing you can do. ठीक है ना, ठीक है इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया। उस्मान, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, then I will get back to you इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।